Yes. Good evening, everybody, once again. And welcome again to concluding lecture for atomic structure. Just have a little recap of the atomic structure, what we have seen here in the chapter. As we have seen that here in chemistry, we are dealing with a matter, and matter is anything which of the respiration versus weight and whose presence can be detected with our 5 senses. According to Dalton's theory, matter is made up of tiny particles known as atom. So atom is very tiny particle, and atoms of the same elements are similar, atoms of the different elements are dissimilar. So journey began at that time, and we are eager to know how is the structure of atom and what are the particles which are present in the atom. So the journey began, and that's why we are interested to know the structure of atom, because once we know the structure of atom, we would be able to find out the properties of an atom or properties of the matter. So in that sense, we are interested to know the structure of atom. So journey began in that sense or that way, and we have gone ahead further. Then Faraday is the first scientist who stated matter is electrical in nature. And then journey began. Then J.J. Thomson discovered electron. Then Rutherford or Goldstein discovered proton. Chadwick, named scientist, discovered neutron. And so onwards, we got 32 more than different types of subatomic particles, called as subatomic particles. Out of that, electrons, protons, and neutrons are called as subatomic particles, of which this atom is made up of. Now, then the next question was that how these particles were held together in an atom, and for that we need some atomic structures or atomic models. So J.J. Thomson has put forth first atomic model, furthermore then Rutherford, then Bohr's atomic model, and then last one is the quantum mechanical model. That's what we discuss in our book. Apart from that, there are many atomic structure, atomic models put forward by different scientists, but the widely accepted are this J.J. Thomson, which was rejected afterwards. We have here Rutherford's atomic model, then furthermore Bohr's atomic model, and lastly, what we have discussed yesterday is the quantum mechanical model. Apart from this, all these atomic models, all the experiment what has done for this atomic model are based on some of the fact or some of the discoveries in other fields. So the discoveries related with the spectrum, what is the spectrum, how is the spectrum, or specifically the French scientists who studied the hydrogen spectrum well. At the same time, the discovery of radioactive elements by Henry Becquerel and Rutherford, who studied, who found out alpha, beta, and gamma radiations. Because when these radiations were discovered, at that time, these alpha radiations were bombarded on the matter, and finally, that Rutherford has studied the scattering of alpha radiations when it bombarded the alpha radiations on a thin gold foil. Then furthermore, the discovery of electromagnetic radiations. Discovery of electromagnetic radiations also laid the foundation for this Bohr's atomic model. So also we have seen the duality of electromagnetic radiations, the properties of electromagnetic radiation, that is lambda, wavelength, frequency, velocity, and amplitude. These are the properties that we have seen. Furthermore, we have also seen quantum theory, which believe that electromagnetic radiations emitted or absorbed in the form of particles. So that is also what we have seen. So afterwards, we have Bohr's atomic model, and then furthermore, before the quantum mechanical model, there was a concept called as a duality of the matter, and we have seen under that there is de Broglie's principle and as well as Heisenberg's principle, and that laid the foundation of this quantum mechanics. And quantum mechanics is the advanced branch of physics which is evolved, and that branch has studied the structure of atom, and they proved the structure of atom, which was for the Rutherford, was explained by a different way, that is in mathematical way, in quantum mechanical way. So Hamiltonian into psi is equal to E into psi. That is the equation of we have seen here. That is a Schrodinger equation also we can say here. और इस equation ने हम लोग को दिया कि there are the quantum mechanical model has best outcome is nothing but the quantum numbers, and that is the set of quantum numbers. Suppose they have given 3 set of quantum numbers, that is principal quantum number, then azimuthal quantum number, and magnetic quantum number. And afterwards, the 4th quantum number is been again discovered a bit lately. That is the name of spin quantum number. So the quantum mechanical model, whose gift is nothing but the set of quantum numbers, and quantum numbers are useful to find out the exact location of electron in an atom. That is what we are seeing here. We have discussed कर दिया. या फिर also it is useful to calculate the energy of electron in an nth cell. How electrons are distributed. For that we need the quantum numbers. That is also what we are seeing. इसके अंदर वो हमने discuss कर दिया. ठीक है. Now the further going ahead, the explanation of this atomic structure is very well given by the quantum mechanical model. Now, it has given many aspects related with the structure of an atom. So we have to a bit move ahead.
बट कल हमने जो देखा था क्वांटम नंबर देखे थे, मैंने बताया कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वांटम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉलेज के अंदर। मोस्ट प्रोबेबली ये 4 क्वांटम नंबर्स में 2 क्वांटम नंबर आपके 11th के एग्जाम के अंदर पूछे जाता है। और जहां तक जेई नीट ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात आती है, सीईटी, वहां पे तो क्वांटम नंबर सबसे अहम पार्ट है इस चैप्टर का। क्योंकि इसके अंदर मैथमेटिकल पार्ट भी है, फॉर्मूला भी है और बहुत बड़ा और जबरदस्त कॉन्सेप्ट भी है। दैट्स व्हाई क्वांटम नंबर हैज टू बी डन फ्रॉम दिस चैप्टर। सो वी हैव आल्सो गिवन द फार्मूला की क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो 4 क्वांटम नंबर्स है। उसमें से पहला जो है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो शेल्स बताता है, फिर एजिमुथल क्वांटम नंबर जो सबशेल बताता है, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ऑर्बिटल बताता है, एंड देन स्पिन क्वांटम नंबर जो कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बताता है कि व्हाट इज दैट। तो दैट इज व्हाट वी हैव सीन हियर, ये हमने उसके अंदर डिस्कस कर दिया। मूविंग एड, ये जो शेल्स है, सबसेल्स है, ऑर्बिटल्स है, कौन से शेल्स के अंदर कितने सबसेल्स होते हैं, कितने सबसेल्स में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, उसके तरह हमने फॉर्मूले देखे बाय व्हिच वी कैन कैलकुलेट। आपका जो टेक्स्ट बुक है बोर्ड का या सीबीएसई का, उसके अंदर वो पूरा चार्ट दिया है कि shells are denoted by n is equal to 1 2 3 4, subshells are denoted by L, that is azimuthal quantum number, that is SPDF or 0 1 2 3, and orbitals are denoted by again here -1 0 2 +1। तो वो उसके अंदर हमने देखा एंड इसी का पूरा एक चार्ट कौन से शेल्स के अंदर कितने सबसेल्स है विद द फॉर्मूला दैट गिवन इन द बुक। आई विल सजेस्ट यू फॉर एवरीवन, this is bit conceptual part and need to refer from the book. That chart is given in the book, so have a look for that chart in the book or wherever you get it. Got it? Now let's move to the next. That is nothing but you can say shapes of atomic orbitals. So we have to discuss the shapes of atomic orbital. So already जाते जाते कल मैंने comments किए थे इसके अंदर shape of atomic orbital. Atomic orbital क्या होता है हमने देखा here, that is this is a 3-dimensional space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum, and that is nothing but the atomic orbital. So these atomic orbitals have different shapes, and the wave function which is related to the atomic orbital is known as psi. So psi square. Psi square is the formula. जब हम निकल देखा मैथ्स के अंदर कि psi square is the formula. So that is you can say psi square is the formula which is nothing but a wave function. This is nothing but a wave function, and these wave functions give the energy related with that particular orbital. Energy related with that particular orbital. So every orbital has some certain shape, and that shape is given by psi square because psi square is related with that particular orbital. It's the wave function of that orbital, and this psi square has the different values for different atomic orbital. Okay, so this psi square has given the values. Now there are we are here atomic orbitals, and we know very well. Generally, when we talk about substance, we are here S, P, D, F. These are the atomic orbitals. These are denoted by 0, 1, 2, and 3. We have to discuss how are the shapes of these atomic orbitals. ठीक है? तो पहला अगर बात करते हैं हम लोग, first that is boundary space diagram. Boundary space diagram of 1s and 2s. These are the two orbitals. 1s and 2 orbitals. S orbital. मतलब जैसे मैंने कल आपको बताया कि s orbital has the spherical shape. P orbital has the dumbbell shape. D orbital has a planar complicated shape, and F orbital has non-planar complicated shape. That is what we get. ये हम लोग उसके अंदर मिलते हैं. So we have seen that. Now we have to discuss a boundary space diagram for 1s orbital and 2s orbital. दो orbital के लिए boundary space diagram हमें discuss करना है. So what is this now? See देखिए कि 1s and here is you can say 2s. So being this is a spherical orbital like this one. This is the 1s and this is the 2s. Normally 1s is more closer. 1s is more closer to nucleus. So just to tell you. Sorry because of the airplane I'm not able to. Now we are talking about this boundary space diagram of 1s orbital and 2s orbital. So this 1s orbital, this 2s orbital. Normally हम जानते हैं कि 1s orbital is more closer to nucleus and 2s orbital is a bit away from the nucleus. So that's why when we are talking about 1s and 2s, so 2s must be a bit larger and 1s must be a bit smaller than this one. So that is a smaller, this must be a larger, this must be a larger size. ये हम लोग यहाँ पे मिल जाता है. Now this is boundary space diagram. Why it is called as a boundary space diagram? Because this orbital is given by psi square. किससे दिखाया जाता है? Psi square से. ये psi square से दिखाया जाता है. तो अब ये psi square क्या है देखिएगा. So what is this psi square?
So here, psi square ki when we are talking about the psi square here, I'm sorry, the bit disturbance of the aeroplane, so I'm not able to deliver that. So just wait fraction of second. Huh. So this is the psi square, which is the wave function related to this particular orbital. Or when the value of this psi square is calculated for 1s or 2s. So this we can say this gives the this diagram. This gives the cloud-like shape. So this is the scientist what get it हुआ है. ठीक है ना यार? अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है आपको, लेकिन बहुत इजी है. जैसे मैंने कल बताया था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल्स में किसी भी ऑर्बिटल में है और इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर लेवल पे चला जाता है. और व्हेन इट कम्स टू ग्राउंड स्टेट दैट एनर्जी इज इमिटेड. उतना एनर्जी वो क्या करता है, इमिट करता है. सो हर ऑर्बिटल का एक अपना एनर्जी है. सो दिस इज द psi square which is related with the wave function of that energy. So एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है. एंड इस psi square का वैल्यू 1s और 2s दोनों के लिए क्या है, और दोनों के लिए जब ये वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, so these are the values which is what for this psi square of this 1s and 2s, जिसके अंदर 90% probability होती है where the finding of the electron. The electrons which are present in 1s, इसके अंदर ये psi square का वैल्यू जो इधर आता है that is a cloud like shape. वो cloud like shape देता है psi square की वैल्यू का. यहाँ पर भी cloud like shape होता है. तो इसी ये क्लियर हो जाता है कि the 1s and 2s orbitals are spherical, but they have a cloud like size, and that's why they got over there. तो वहां पे आ जाते हैं. और इसके अंदर psi square का वैल्यू कहीं भी जीरो नहीं होता है, कहीं भी जीरो नहीं है. Right from the nucleus when you start with this, nowhere psi square has the zero value. अगर psi square का वैल्यू जीरो होता था तो there would be a 100% possibility to have the electron here in this one, but ऐसा वैल्यू है नहीं है. So that's why the probability of finding the electron is 90% almost. तो सेकेंड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, मानो यहाँ पे न्यूक्लियस है मेरा, यहाँ पे हमारा 1s. तो 1s का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना दिखाई देता है, कितना दिखाई देता है. हाँ, न्यूक्लियस से जब निकलते हैं तो when we start right from the nucleus, at that time the probability of finding the electron is maximum. Probability of finding the electron is maximum here in this cloud. इस क्लाउड में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, that is almost 90%. ना हम ये पूछ रहे हैं वापस कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज नॉट 100%. उसका रीजन क्या है? तो ये जो psi square है इस 1s के लिए, इस psi square का वैल्यू जीरो नहीं आता है. अगर वो जीरो आता था तो वो 100% पॉसिबिलिटी थी. there is that may be close to zero, but that is not equal to zero, and that's why the probability of finding the electron is 90% almost, but that 10% is because of that value which we are not able to find out that zero value here in this spare one. So clear with this? So that is what we get here. So ये इस तरीके से आता है. तो simply आपको इतना ध्यान रखना है यहाँ पे कि when we are talking about the shape of this atomic orbitals, तो 1s मतलब s atomic orbital is spherical one, and how they got it, this spherical shape is discussed or discovered by the psi square value. So psi square is a wave function which is related with that particular orbital, and this psi square gives the cloud-like shape for this 1s and 2s orbitals, and where the probability of finding the electron is almost 90%. 90%. Why it is not 100%? Because here in this cloud we didn't get the psi square value which is equal to zero. If it would have a zero value, psi square has the zero value, then it would have a 100% probability to find the electron in this one. But case is not like that, and that's why we have the 90% probability to find the electron here in this one. So 2s orbital का electron न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक कहीं भी पूरे स्फीयर में बाउंड्री स्पेस मतलब दिस इज द बाउंड्री, इसके बाहर नहीं जाएगा, उस बाउंड्री के अंदर कहीं भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है आपको. दैट इज द प्रोबेबिलिटी. ये बाउंड्री के अंदर कहीं भी मिल जाए, और ये सर्कल नहीं है, ये एक स्फीयर की तरह कंसीडर करना है, फुटबॉल की तरह आपको कंसीडर करना है. So that is the what we can say shapes of this atomic orbitals, specifically for this 1s and 2s. Are you clear with this? This has been discovered by the scientists. Then second we are here, that is shapes of p orbital. When we are talking about shapes of p orbital, so let's move. What are the shapes of p orbital? So here is the p orbital. When p orbitals are studied well, we found that again here p orbital के अंदर भी psi square के values आते हैं, लेकिन psi square के value suggests that psi square value of this p orbital suggests that it has two lobes. Suppose we are here x-axis, we have y-axis, and we are here z-axis. So these are the axes what we can see here. ये axis होता है, और इस axis के अगर find out करते हैं हम लोग,
तो अब देखिए ना कि p के अंदर when we are talking about 2p it has three values, that is 2px, see 2p के अंदर तीन होते हैं, that is 2px 2py and 2pz, that is what, क्योंकि हमने ये देखा हुआ है शेल, शेल्स के अंदर सबसेल और सबसेल के अंदर ऑर्बिटल। तो 2p 2 is a second shell, p is the subshell। तो सेकंड p के अंदर तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, 2px 2py 2pz, मतलब ये -1 0 एंड +1, ये हमने कल देखा हुआ है, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के आधार पर। तो और थ्योरेटिकल लैंग्वेज में बात करेंगे तो 2p नाम के सबसेल के अंदर तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, 2px 2py एंड 2pz, देयर आर थ्री ऑर्बिटल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दैट। सो ये तीन ऑर्बिटल उन्हें 2px 2py 2pz क्यों कहा जाता है? बिकॉज अगर हम एक्सिस पे देखते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे देखते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे रहते हैं। यहाँ पे नोडल प्लेन भी होता है। सो और ये नोडल प्लेन किसी भी एक, मान लो अगर मैं 2px को लेता हूँ, व्हेन आई डिस्कस अ 2px ऑर्बिटल, तो 2px ऑर्बिटल हैज टू लोब्स, वन लोब लाई ऑन x एक्सिस हियर और अनदर लोब लाई ऑन x एक्सिस नेगेटिव हियर। तो दो तरीके से लोब होते हैं, तो एक लोब पॉजिटिव एक्सिस पे है और एक नेगेटिव एक्सिस पे उसका लोब होता है, तो इट हैज अ टू लोब्स। तो अब देखिए मैं ऐसा एक प्लेन निकाल रहा हूँ, दिस इज द प्लेन, ओके, व्हिच इज यू कैन से y z प्लेन से मान सकता है, because it is perpendicular to x axis, this is the yz plane, मेरा हाथ जो है ऐसा है ना, so I am making like this one, this is the plane, जैसे कि आपको बोर्ड एक प्लेन दिखाई देता है, वैसा ये एक प्लेन है। so इस प्लेन में मैं ऐसा रखता हूँ, तो ठीक है, this is the plane which separates, this is another lobe, this is another lobe, तो दो लोब होते हैं, एक ही ऑर्बिटल है लाइक दिस, देखिए एक ही ऑर्बिटल लाइक दिस, इस तरीके से इस ऑर्बिटल का ये एक लोब माना जाता है, दूसरा लोब माना जाता है। जैसे कि हम लोग जिम में देखते हैं कि डंबल्स, या फिर स्कूल में आपने देखे होंगे डंबल्स कभी के लोग लिए जाता है। सो जिस तरीके से जिम में हम देखते हैं डंबल्स, डंबल हैज टू लोब्स, उसी तरीके से p ऑर्बिटल का शेप साई स्क्वायर सजेस्ट करता है कि p लोब का शेप इस तरीके से डंबल शेप जैसा है, जिसके अंदर दो लोब्स होते हैं, एक लोब उसके पॉजिटिव एक्सिस पे होता है और दूसरा लोब उसके नेगेटिव एक्सिस पे होता है। और ये जो प्लेन है, जो प्लेन उसे सेपरेट करता है, दो लोब को सेपरेट करता है, जहां पे साई स्क्वायर का वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होता है, बट नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बहुत क्लोज होता है। इसका मतलब है इस नोडल प्लेन पे जो नोडल प्लेन दोनों लोग को सेपरेट करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की चांसेस बहुत जीरो होता है, इलेक्ट्रॉन मिलने की चांसेस नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं तो नहीं, यहाँ पे कहीं तो मिलेगा, सो इलेक्ट्रॉन या तो इस लोब में मिलेगा या तो इलेक्ट्रॉन इस लोब में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे where this nodal plane is exist or separate both of the planes, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की चांसेस बहुत कम है। Simply when we are talking of the shapes of p orbital, the psi square values of p orbital or p orbital suggest that p has a dumbbell shape, and it has two lobes. So this is the first lobe, this is the second lobe, and these lobes are separated by nodal plane, जो दोनों लोब को क्या करता है, सेपरेट करता है। तो इस तरीके से वो सेपरेट आउट होता है, and that is what we get here, nodal plane and nodal surfaces, this is the nodal surface and this is nodal plane, दोनों लोग को सेपरेट आउट करता है। ठीक है, तो theoretically p orbital has a dumbbell shape which is suggested by psi square values. Psi square values of the p orbital suggest it has a dumbbell shape, it has two lobes, one lobe lies on a positive axis, another lies on a negative axis, and these lobes are separated by nodal plane where the psi square value is almost equal to zero, not zero but zero के बहुत ही close होता है, and that's why the electron the probability of finding the electron at nodal planes is zero, equal to no, but the probability of finding the electron increases when we go to the nodal surfaces. nodal surfaces पे हम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसा ये साई स्क्वायर का वैल्यूज p ऑर्बिटल के बारे में कहता है। लेकिन p के अंदर तीन ऑर्बिटल्स है, ये तो हमने x एक्सिस पे निकाला, सेम लाइक दैट y एक्सिस पे होगा, सम लाइक दैट z एक्सिस पे होगा। सो अभी देखिए कि ये अगर मैंने x माना, ये हमारा y है, तो ये हमारा z रहेगा, तो ये रहा x एक्सिस पे, तो उसी तरीके से y एक्सिस पे भी रहेगा, सी दिस इज y एक्सिस लाइक दिस वन एंड दिस इज ऑन z एक्सिस, इस तरीके से इसी डायग्राम को थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से निकालते हैं, तो देखिए ये डायग्राम थोड़ा सा निकाला जा सकता है, लाइक दिस आर द प्लेन्स, इस तरीके से निकाला जा सकता है, ये थोड़ा सा ये इस तरीके से, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम समझने में मुश्किल जाता है, इसलिए डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं लोग, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द z एक्सिस। सो इस तरीके से होता है, these are the shapes of p orbital। तो सिंपल सा, the p orbital shapes are found to be a dumbbell shape because of psi square value, and psi square value suggests that it has two lobes, one lobe lies on a positive axis, another on a negative axis, and these lobes are separated by a nodal plane where the psi square value is almost equal to zero, not the zero but zero के बहुत close जाता है, and that's why वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की चांसेस बहुत कम होती है, and that is what we can see p orbital, और उसमें से p x lies on the x axis, p y lie on the y axis, p z lie on the z axis, इस तरीके से होता है।
So these are the shapes of s orbitals and p orbitals. When we are talking about shapes of d orbital, तो d के अंदर आपको अलग अलग ऑर्बिटल्स मिलते हैं जिसका प्लेनर कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है, प्लेनर कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है। ओके, अभी वो बोर्ड पे को डायरेक्ट ड्रॉ करूंगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला ज्यादा, लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग डी ऑर्बिटल, डी के अंदर वापस पांच होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। So these are the orbitals. ठीक लगे? तो हम जब when we are talking about x, okay, when we are talking about, so this is the x y x y x y, इस तरीके से हम लोग लेते हैं। So तीन एक्सिस मैंने निकाले, x एक्सिस y एक्सिस x एक्सिस y एक्सिस x एक्सिस y एक्सिस, z भी होगा उसमें, थोड़ा z भी होगा। So this is the z orbital what you can see. So this is z, okay, सबके अंदर ये z एक्सिस यहाँ पे दिखाई देता है। Now thing is that dxy, नाम ये d सबशेल के अंदर, d सबशेल के अंदर देयर आर 5 ऑर्बिटल्स। शेल्स के अंदर सबशेल है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स है। तो d नाम का जो सबशेल है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स है। तो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। देयर आर 5 ऑर्बिटल्स व्हिच आर प्रेजेंट एंड दिस इज सजेस्टेड बाय क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर का जो चार्ट मैंने आपको बताया बुक के अंदर, वो देख लीजिए, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स है। तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिटल dxy। अभी नाम से पता चलता है कि दिस इज द ऑर्बिटल व्हिच इज dxy, मतलब दिस लाइज इन xy एक्सिस, इट इज परपेंडिकुलर टू z एक्सिस। जो इसके अंदर एब्सेंट है वो उसको परपेंडिकुलर है। तो इसके अंदर xy तो एब्सेंट z है, तो इट इज परपेंडिकुलर टू z, ये z को परपेंडिकुलर होगा। dyz जिसके अंदर x है, मतलब x को परपेंडिकुलर होगा। dxz, सो दिस यू कैन से इसके अंदर y लैकिंग है, तो इट इज परपेंडिकुलर टू y। dx स्क्वायर माइनस ये एक्चुअली x एक्सिस और y एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है, एक्चुअली x एक्सिस और y एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है। And this is dz square that lies on z axis. So these are the 5 orbitals, ये एक साथ मिक्स करके यहाँ पे आ जाते हैं। तो like that, अगर मैं dxy की बात करता हूँ, dxy की बात करता हूँ, तो सीन here. तो this is the x axis and this is the y axis. तो ये इस तरीके से होगी, like this, इस तरीके से होगी। तो that lies on the x axis and z axis is perpendicular to that. ये दोनों ऑर्बिटल में x और y एक्सिस में निकालूंगा, प्लेन में निकालूंगा, लेकिन z प्लेन उसको क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस तरीके से सारे डायग्राम हम लोग अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, किसको परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो उसके लिए अभी यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा तो भी आपको शायद नहीं समझेगा, इसलिए मैं आज के लेट या फिर कल के लेक्चर में आपको एक स्क्रीन शेयर करूंगा जिसके अंदर ये डायग्राम आपके सामने, आपकी बुक में भी डायग्राम है, ड्रॉ भी किए जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि दिस डायग्राम इज 3 डायमेंशनल डायग्राम और यहाँ पे 3 प्लेन होते हैं, दिस इज द एक्स प्लेन, दिस इज वाई प्लेन एंड जेड प्लेन। और ये 3 प्लेन में आपको इसके अंदर ये स्ट्रक्चर मिलता है और तब जाके हम लोग उस स्ट्रक्चर को ऑपरेट कर सकते हैं। क्लियर विद दिस? सो दैट इज व्हाट वी कैन सी हियर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द शेप्स ऑफ d atomic orbitals। एट दैट टाइम d orbital has 5 sets, 1 2 3 4 and 5, and these 5 sets, these 5 orbitals have this particular orientation here in this space, and that's why they are called as planar complicated. Well, they are in particular plane, but though they are complicated, and that's why the planar complicated is the shape which is called. जैसे कि s orbitals are spherical, p orbitals are dumbbell shape, उसी तरीके से planar complicated is the name suggested for this one, as you can say d orbitals. And f orbital की जब बात करते हैं लोग, they are non planar complicated, उनके ड्रॉ करना भी मुश्किल जाता है बोर्ड के ऊपर, बट उनके शेप्स है। हम स्क्रीन शेयर पे आपको करूंगा, उस स्क्रीन शेयर के साथ आप बाद में उनसे देख सकते हैं क्या पॉसिबिलिटीज है उनके अंदर के। But that is what we can say shapes of atomic orbital. So hope so you got this up to, थोड़ा difficult है but फिर भी आपको एक हद तक समझा होगा कि by calculating the chi-square values, scientists try to find out the atomic orbitals which are present in the atom, and they found that the atomic orbital has the shapes which are given by azimuthal quantum number, that is s, p, d, and f. So s orbital is spherical one, or Monte space diagram can be drawn for this one, as well as double shape diagram can be drawn for d orbitals, and again here for the d orbitals. So diagrams, their shape and their chi-square value and the probability of finding plane and nodal plane, इतने पॉइंट्स उसके अंदर आते हैं। बस 4-5 पॉइंट, अगर ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट तो सिंपल सी बात है कि डायग्राम एक बार देखो, बहुत इजी डायग्राम है, समझ में भी आता है, और एट द सेम टाइम उसके अंदर 2-3 ही पॉइंट आते हैं कि chi-square के वैल्यूज उसके अंदर कितने आते हैं, किसके लिए शेप डंबल है और नोडल प्लेन्स क्या है, बस ये 3-4 पॉइंट याद में रखते हो तो दिस डन हो गया। दैट इज यू कैन से हियर शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। Clear with this? And now let's move to the concluding, very important part of this chapter is called the electronic configuration. So we have to discuss the electronic configuration. Okay.
So this is electronic configuration. What is this electronic configuration means? Now see, Abhi, by going through the atomic structure, we have gone through 4 atomic models. J.J. Thomson, उसके प्रॉब्लम थे रिजेक्ट किया गया, फिर सामने आया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसने कुछ पॉइंट अच्छे एक्सप्लेन किए, फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल आया, फिर उसे रिजेक्ट किया, फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज बीन ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड, तो सारा हमारे सामने आ जाता है कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नाउ द थिंग इज दैट इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हाउ दिस इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेल, सबसेल्स एंड ऑर्बिटल। शेल, सबसेल्स और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हमें देखना है। एंड दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल, सबसेल्स एंड ऑर्बिटल। ये बेसिक क्वेश्चन रुदरफोर्ड के भी पूछा गया था। रुदरफोर्ड ने जब बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, तो पूछा गया कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ही कुड नॉट आंसर दैट पार्ट कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन which is the outcome of all these theories, as well as there is a contribution by 3 different scientists. That is above is one of the scientists, Hans Rule and Pauli. These are the 3 different scientists who contributed here in this distribution of electrons in cell, substance and orbit. कौन से शेल्स में, कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन कैसे रखे गए हैं, ये बताना मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Got it? Now, before proceeding to electronic configuration, there is one concept called as energies of the orbital. So let's move first is the energies of the orbital. So energy of orbitals. अभी देखिए, जैसे मैंने बताया कि this is the structure of atom जिसके अंदर न्यूक्लियस है, अराउंड में शेल, सबस्टेंस एंड ऑर्बिटल्स। एंड दिस इज नथिंग बट 1 2 3 ऐसा 4 हम लोग जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं, कितना जाते हैं। So it has been stated or it has been clear that these orbitals, shell, substance is nothing but the energy levels, और energy increases away from the nucleus। ये पूरा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसके पहले के जो पास्ट साइंटिस्ट जिन्होंने स्पेक्ट्रम स्टडी किया, उन्होंने यही तो बताया कि एनर्जी इंक्रीजेस away from the nucleus. The nearest shell subshell orbital has the lowest energy and farthest has the highest energy. इतना उन्होंने बताया। लेकिन एटम के अंदर शेल्स है, शेल्स के अंदर सबसेल है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल है, तो थोड़ा सा उनका जो एनर्जी का लेवल है वो बिट कॉम्प्लिकेटेड बनता है, बिट कॉम्प्लिकेटेड बनता है। अगर ये इतना सिंपल होता था कि 1 2 3 4, तो सिंपली कह सकते कि पहले का एनर्जी कम है, दूसरे का ज्यादा है, तीसरे का और ज्यादा है, फोर्थ का और ज्यादा है, ये है। बट ये शेल्स है, शेल्स के अंदर सबसेल है, तो सबसेल के अंदर एनर्जी सीक्वेंस कैसा है, उसके अंदर ऑर्बिटल है, उसके अंदर एनर्जी सीक्वेंस कैसा है, दैट वाज द क्वेश्चन। एंड दैट्स व्हाई we need this concept called as energy of the orbitals. And energy of the orbitals is calculated by the formula n plus n. That is, you can say n plus n. So हम अच्छी तरह जानते हैं what is this n, what is this n. This n is nothing but the principal quantum number and n is nothing but the azimuthal quantum number. हम अच्छी तरह जानते हैं कि n has the value 1 2 3 4 onwards, or l has the value 0 1 2 3, that is s p d and f, जिसे हम थ्योरेटिकली कहते हैं। ये उनके वैल्यूज है। दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4, दिस इज azimuthal quantum number SPDF or 0 1 2 3, like this, these are the values. तो अभी ये n plus l rule is there for the energy of the orbital. How to calculate the energy of the orbital? So we calculate the energy of orbital by using the n plus l rule. तो अभी ये क्या है देखिए ना, कोई भी ऑर्बिटल लेते हैं, हम कोई भी ऑर्बिटल लेते हैं, जैसे किसी भी एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, दिस इज 1s 2s 2p 3s, ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं। मतलब मेन शेल 1 है, तो 1 के अंदर ऐसे है, 2 है, 2 के अंदर ऐसे है, p है, 3 के अंदर 3s है, 3p 3d, ये इस तरीके से ऑर्बिटल्स है। तो अभी n plus l मतलब क्या होता है? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। n, दिस रिप्रेजेंट द n, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड दिस रिप्रेजेंट द l। कहीं भी किसी भी, दिस इज कॉल्ड एज कैन से ऑर्बिटल नोटेशन और ऑर्बिटल डिनोशन। मतलब जब थ्योरेटिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है तो उसे हम ऑर्बिटल नोटेशन में जाना पड़ता है या ऑर्बिटल डायग्राम में जाना पड़ता है। तो ऑर्बिटल डायग्राम ये बॉक्स डायग्राम होता है, एंड दिस इज ऑर्बिटल नोटेशन। तो दिस इज द ऑर्बिटल नोटेशन थ्योरेटिकली, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स भरते जाएंगे, क्योंकि हर टाइम डायग्राम ड्रॉ करके उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल अप नहीं करेंगे। सो दिस इज द प्रेजेंटेशन, नोटेशन प्रेजेंटेशन एंड ऑर्बिटल नोटेशन। तो फर्स्ट ऑर्बिटल इज 1s, सेकंड इज 2s 2p 3s, वो शेल्स एंड सबस्टेंस उसके अंदर दिए हुए हैं। तो इसके अंदर ये जो 1 इंडिकेट कर रहा है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इंडिकेट कर रहा है s, इसके अंदर 2 इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s इज अगेन azimuthal quantum number, here 2 इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, p इज azimuthal quantum number, so on। तो इसमें से कोई भी लेते हैं ना, हम लोग कोई भी लेते हैं, मतलब 2s लेते हैं, हम लोग 2s एंड 3p लेते हैं, 2s और 2p लेते हैं, 2s और 2p लेते हैं। ओके, तो अभी इसका n plus l, इसका n कितना है 2, और s इज l है ना, s इज l, तो s का l कितना है 0 0।
तो वैल्यू कितना आएगा 2। इसके लिए लेते हैं 2 प्लस p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 1 है, तो ये कितना आएगा 3 आएगा। तो अब देखिए 2p का n प्लस l वैल्यू 3 आता है, कि 2p के अंदर 2 रिप्रेजेंटिंग n, l रिप्रेजेंटिंग दिस p, तो p का वैल्यू कितना है 1, तो 2 प्लस 1 पुट करेंगे तो 3 आता है। सो 2p ऑर्बिटल का n प्लस वैल्यू आता है 3 और 2s ऑर्बिटल का n प्लस वैल्यू आता है 2। सो अभी कौन सा हायर है, हायर इज दिस वन, तो इसका मतलब दिस हैज द हायर एनर्जी, दिस हैज द लोअर एनर्जी। सो दिस इज कॉल्ड एज n plus l rule। तो n plus l rule indicates the higher energy orbital, lower energy orbital। the orbital, इसमें से कोई भी ऑर्बिटल लो, the orbital whose energy is higher, n plus l is higher, having higher energy, or whose n plus l value is lower, having lower energy, that is having lower energy। तो ये दोनों कंपेयर करेंगे तो इस तरीके से आता है। क्लियर विद दिस? सो the orbital having higher value for n plus l has the higher energy, and having lower value for n plus l having the lower energy। That is what we get here। Sometime this value may get similarity। जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि we are here 2p and 3s। अभी 2p के अंदर क्या करते हैं 2 plus 1 तो it comes to 3, और यहाँ पे क्या आएगा 3 plus s का वैल्यू कितना है 0 0, तो 3 plus 0 is 3। अभी दोनों का वैल्यू सेम हो गए। नाउ 2p और 3s ऑर्बिटल ऐसे है, 2p और 3s ऑर्बिटल ऐसे है जिसका दोनों का n plus l वैल्यू सेम आता है। हायर डिफरेंट आएगा तो हम जानते हैं जिसका हायर वैल्यू है दैट इज हैविंग हायर वैल्यू, और जिसका लोअर है दैट इज हैविंग लोअर वैल्यू। बट हियर इन दिस केस यू कैन सी हियर हैविंग द सिमिलर वैल्यू। तो अभी इस केस में whose energy is higher and whose energy is lower कैसे डिसाइड करेंगे हम? तो इसीलिए ये यूज किया जाता है इस ऑर्बिटल के अंदर। इस ऑर्बिटल के अंदर n का वैल्यू 2 है और इस ऑर्बिटल के अंदर n का वैल्यू कितना है 3 है। So this is 2 and this is 3। In case whenever the n plus l ruled energy becomes similar, at that time the n value is considered। So n value of this is higher and when n value of this is lower, so the orbital having higher value of n is considered of higher energy। तो 3s का एनर्जी ज्यादा है और 2p का एनर्जी कम है। क्यों? तो उसके अंदर n का वैल्यू 3 है, इसके अंदर n का वैल्यू 2 है। और सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम लोग, n plus l वैल्यू। अगर n plus l वैल्यू किसी का ज्यादा है तो दैट हैज टू बी हायर एनर्जी लेवल, और जिसका n plus l वैल्यू कम है दैट हैज टू बी लोअर एनर्जी लेवल। जो यहाँ पे देखा इन केस n plus l वैल्यू अगर सिमिलर हो जाता है तो उस केस में हम n का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और जिसका n का वैल्यू ज्यादा होगा दैट इज हैविंग द हायर एनर्जी। दिस इज द एनर्जी रूल। This is the n plus l is the energy rule which has to be considered while finding the energies of the orbital। While finding the energies of the orbital। तो इसके अंदर देखेंगे तो दिस इज द सीक्वेंस जिसके अंदर एनर्जी बढ़ता जाता है, जिसके अंदर एनर्जी बढ़ता जाता है। लेकिन इसके अंदर भी ये होता है ना, 2p के अंदर बात करेंगे तो देयर इज 2px 2py एंड 2pz। ये ऑर्बिटल्स होते हैं, ये ऑर्बिटल्स होते हैं। d के अंदर बात करते हैं 3d, 3d आएगा। 3d के अंदर बात करेंगे तो 3dxy 3dyz 3dxz 3dx square minus y square and 3d z square। ये पांच ऑर्बिटल्स आते हैं, पांच ऑर्बिटल्स आते हैं। तो इसका मतलब क्या है देखिए आप लोग, when we are talking about 3d orbital 3d subcell it has 5 orbitals। when we are talking 2p subcell it has 3 orbitals। उनके एनर्जी का कैसा होगा, this is also being studied। ये रूल खत्म है, इनका भी स्टडी किया, और इनका स्टडी करेंगे तो पता चलता है कि these 2px 2py 2pz having the similar energy। 2px 2py 2pz are having the similar energy। हाइड्रोजन के केस में तो 1s 2s दोनों का एनर्जी सेम ही है। हाइड्रोजन के केस में 1s और 2s का एनर्जी सिमिलर है हाइड्रोजन एटम के केस में। दिस इज बीन स्टडीड। जब हायर एटम पे चलते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो देयर इज अ रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई एनर्जी बदलता है। तो और एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल आल्सो डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दैट एटम, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो द क्वांटम नंबर वैल्यूज डिफर करेंगे उसके हिसाब से। तो क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या है एलिमेंटल क्वांटम नंबर, क्या है हमारा, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिलहाल में this is the subcell and this has 3 orbitals। So these 3 orbitals when studied carefully 2px 2py and 2pz found have the similar values। अभी इनका अगर वैल्यू सिमिलर है तो उन्हें कैसा पुट करेंगे हम, मतलब इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि किसका एनर्जी कम है और किसका एनर्जी ज्यादा है। सो इट इज बीन फाउंड दैट the orbitals having the same energy are called as a degenerate orbital। इन्हें क्या बोला जाता है, degenerate orbital, degenerate orbitals। degenerate orbital ये बहुत इंपॉर्टेंट है। degenerate orbital, degenerate orbitals are the orbitals having similar energy। so the orbitals having similar energy are called as degenerate orbitals। पूरे degenerate orbital ऐसा लोग कहते हैं। अंदर जो क्लियर ये हम लोग यहाँ पे मिलता है।
Clear with this? So that is degenerate orbital, and that's what we can go ahead with this degenerate orbitals. Clear with this? So energy के अंदर देखते हैं हम लोग electronic configuration depends upon the distribution of electrons in shell, subshells, and orbital, and we found that the distribution of electrons depends upon the energy. और energy के अंदर देखेंगे हम लोग तो energy का क्या होता है यहाँ पे? We have seen that the energy is calculated by n plus L rule. So in case of we calculate with n plus L rule, having higher value is higher energy, having lower value is lower energy, and having similar value, and then we consider that the orbital whose n value is greater has to be higher, and whose n value is lower has to be the lower value of the. So this is the energy. Now, let's move ahead. Electronic configuration. Actually, this electronic configuration is done by three important rules. Number one is can say above principle. Number two is Pauli's exclusion principle. Number three is Hunt's rule. Pin sizes. Electronic configuration, distribution of electrons in cell, subcells, and orbital is governed by these three rules: above principle, next is Pauli's exclusion principle, and Hunt's rule of maximum multiplicity. अभी जो हमने बेसिकली देखा above principle क्या है? फर्स्ट की बात करते तो n plus L rule, that is increasing energy rule, is the above principle itself. above नाम के साइंटिस्ट ने ही इस रूल के अंदर काफी सारा कंट्रीब्यूशन किया है. So n plus L rule, which is called as energy rule, is given by above principle. So according to above principle or energy increasing order, the orbital having higher value for n plus L is higher energy, and orbital having lower energy for n plus L is have lower energy. So when electrons are filled in the orbitals or shell subcells, that is also called as building up of electrons. According to above, that is called as building up of electrons. That is how electrons are filled in shell subcells and orbital. So they are filled according to lower energy field first, followed by higher energy. इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी में भरे जाते हैं, फिर हाई एनर्जी में भरे जाते हैं. जिस तरीके से हमारे घर के अंदर हम जब खाना बनाते हैं तो छोटे बच्चों को सबसे पहले सर्व किया जाता है, फिर बड़े बड़े के लिए जाता है ना. तो छोटे बच्चों को एनर्जी ज्यादा चाहिए तो उनको ज्यादा दिया जाता है, पहले दिया जाता है, लाइक दैट. यहाँ पे डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से भरे जाते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट फिल्ड इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फॉलोड बाय हायर. तो स्ट्रक्चरल पैटर्न में जो न्यूक्लियस के नजदीक है वो सबसे पहले भरा जाएगा, फिर दूर का बढ़ता जाएगा, लाइक दैट. This is the way how these electrons are filled in an atom. So this is called as above principle. Pauli's exclusion principle क्या कहता है कि here you can say no any two electrons in an atom can have similar set of values for all four quantum numbers. No किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर वैल्यूज एक जैसे नहीं होते हैं, कोई ना कोई तो डिफरेंट होगा. तीन एक जैसे हो सकते हैं, फोर्थ हैज टू बी डिफरेंट. दैट इज कॉल्ड यू कैन से Pauli's exclusion principle. Every electron is excluded from that. Every electron. Say for example, जैसे कि आप भाई बहन हो और आप एक घर में रहते हो और आपके नाम से कोई लेटर आता है, आपके भाई के भी नाम से लेटर आता है, तो सब कुछ सेम रहेगा उसके अंदर सिवाय आपके नाम के. आपका फर्स्ट नाम उसके अंदर डिफरेंट रहेगा, है ना. वो तो होना ही होना, अदरवाइज वो एक दूसरे को काउंटर होगा. उसी तरीके से यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू एक जैसे नहीं होते. There three can be similar, but fourth has to be different. At least spin तो different होगा. So Pauli's exclusion principle यही बताता है कि no any two electrons in atom can have similar set of all four quantum number values. किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर के वैल्यू एक जैसे नहीं होते. That you can say Pauli's exclusion principle. And Hunt's rule of multiple maximum multiplicity क्या कहता है? Hunt's rule. When we are talking about the degenerate orbital, जैसे कि see this is the box diagram of this is 2px, 2py और 2pz. Okay, so these are the orbitals. जिसका box diagram है orbital है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरने हैं. So अभी these orbitals are degenerate orbital. These orbitals are degenerate orbitals. तो होगा क्या कि इनका सबका एनर्जी सेम है. When these atomic orbitals have the same energy, when these atomic orbitals have the same energy, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे? तो according to Hunt's rule, electrons in a degenerate orbitals are filled single, or there is no pairing occurs unless and until first electron is occupied in that orbital, isn't it? So no pairing in case of degenerate orbital till
each orbital contains one electron each, like that, one electron. So that is what we can say Hund's rule of maximum. The pairing start afterwards. First, one electron is filled in each and every orbital having the degeneration. Degeneration मतलब same energy level. आपने यहाँ पे लिखा था. What is degenerate orbitals? Orbitals having same energy. So orbitals having same energy are called degenerate atomic orbitals. And in case of degenerate orbital, we got this one. The electrons are first filled single and then it starts pairing. There won't occur a pairing unless and until every orbital must contain at least one electron. This is called the Hund's rule. तो तीनों रूल हो गए. पहला अबव प्रिंसिपल जो बताता है कि एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इज कैलकुलेटेड बाय n plus l rule and the building मतलब building of electrons, building of atomic orbital is according to lower energy orbital lower energy orbital is filled first followed by higher and higher. दूसरा, Pauli's exclusion principle states that no any two electrons in an atom can have similar set of values. No. And Hund's rule states that there is no pairing occurs in a case of degenerate atomic orbitals unless and until each and every orbital is filled with one electron each. That is what we can say here, governed by this above principle, Pauli's exclusion principle, and Hund's rule of magnetic multiplicity as far as our electronic configuration is concerned, distribution of electrons is concerned. Clear? Now, the actual, when we are talking about actual electronic configuration, at that time we'll have this one. So, how the actual electronic configuration occurs here? The actual electronic configuration is given by, you can say, orbital notation. Orbital notation, or you can say orbital diagram. Orbital notation or orbital diagram. अब देखिए, हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि this is 1, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5, n is equal to 6, n is equal to 7. हम अच्छी तरह जानते हैं. These are the shells 1, 2, 3, 4, 5. हर shells के अंदर क्या होते हैं? सब shells होते हैं. So 1 के अंदर there is only one, that is 1s. 2 के अंदर क्या होता है? 2s and 2p होता है. 3 के अंदर कितना होता है? 3s, 3p, 3d. जितने नंबर का शेल है उतने उसके अंदर क्या होता है? सब शेल्स होते हैं. सो 1 के अंदर 1s, यहाँ पे 2s, ये 2 है 2s 2p, 3 है 3s 3p 3d, यहाँ पे होगा 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f 4f 5f. आगे जाने की जरूरत नहीं थी. 5f के बाद भी आगे जा सकते हैं हम लोग. gh ऐसे बहुत सारे हैं, बट जाने की जरूरत नहीं होती बिकॉज हमारे पास 118 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इतना सफिशिएंट है. 6s 6p 6d और 6f like this. 7s 7p 7d 7f. So this is, you can say s, this is s p d and f like this. इस तरीके से होते हैं. So these are the orbitals actually. और उनका एनर्जी सीक्वेंस अगर हम n plus l रूल से कैलकुलेट करते जो हमने अभी किया था n plus l रूल से, तो देखिए वो इस तरीके से आता है. एरो निकालते हैं हम लोग, क्रॉस एरो. देखिए this is the sequence what we get here. Yeah. So that will give the sequence. This diagram will give the sequence of energy of these orbitals. तो अब देखिए एरो से क्लाइंब करना है, वापस नीचे आना है, तो हम देख सकते हैं कि सीक्वेंस क्या होगा. सो दिस इज पहला जो काउंटर हो रहा है, दिस इज 1s कॉमा, फिर नीचे आता हूं, फिर क्लाइंब करता हूं, दिस इज 2s, फिर 2s से नीचे आता हूं, फिर वापस 2p, देन 3s, 3s के बाद वापस 3p, ये हटा देता हूं, 3p, 3p के बाद आता है 4s, 4s के बाद आता है 3d, है ना, 3d के बाद आता है 4p, 4p के बाद 5s, 4d, 5p, 6, ऐसे निकल जाना. मतलब just climb the arrow, come to the bottom, again climb the arrow. This is diagonally plus, this is diagonally plus. So clear all of you? So this is the diagram. मतलब ये सारा जो सीक्वेंस है लर्न करने की जरूरत नहीं. काफी सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं. ये सारा एनर्जी सीक्वेंस लर्न करते हैं. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d like that, 4s, 3d. ये सीक्वेंस में गलत होने के चांसेस है बिकॉज n plus l रूल अप्लाई करके उनका एनर्जी सीक्वेंस निकाला जाता है. तो हम जब टेक्निकली देखते हैं तो n plus l रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं. जस्ट ये डायग्राम बनाते हैं तो इससे हम लोग कितने भी ऑर्बिटल निकाल सकते हैं, किसका एनर्जी कितना है. सो दैट्स व्हाई दिस इज द इजी वे टू रिकॉल द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स एंड टू सेट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल. सो दिस वन, तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s लाइक दैट, दिस इज द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल. ठीक है. एंड दिस इटसेल्फ इज कॉल्ड एज, यू कैन से, ऑर्बिटल नोटेशन. इसे ऑर्बिटल नोटेशन ऐसा कहा जाता है. ठीक है. नाउ
But actually, electronic configuration, that is orbital notations, and as well as you can see here, orbital diagram, we have to have the electronic configuration of the element. There are 118 elements in the periodic table. Out of that, we have to see, discuss at least the electronic configuration of 30 elements here in this one. But in order to discuss the electronic configuration, we need to have a bit more clarity. So I was expecting that this lecture will get over with this chapter, but a big part is remaining, so we need to go for the next lecture. So I will suggest you go with whatever part we have discussed, that is electronic configuration, above principle, unstable Pauli exclusion principle. And then tomorrow we will have the actual electronic configuration, which is very fundamental part here in chemistry. Furthermore, we have to discuss many chapters where we need this electronic configuration. You have with us? So tomorrow we will discuss the electronic configuration. Till then, thank you very much. See you.